because that is the investigation into the alleged irregularities in the NEET examination that is now quickly picking up pace with the CBI now that has registered its first FIR, and the probe agency is all set to take over the ongoing cases filed in Bihar and Gujarat as well. Times Now, meanwhile, has learned that CBI has also dispatched teams to both Patna in Bihar and Godhra in Gujarat for the ongoing investigation. Now, in the meantime, as the breaking update that is now coming in of the CBI taking over now, this is on the directions that has been given by the government of India to probe into the alleged irregularities, what is being said, and the assurance that has been given. The people inside, even when it comes to within the NTA as well, will not be spared if they are found alleging in any discrepancies or misconduct. Now, there were already serious allegations that were leveled. However, when it comes to the government of India already has taken action when it comes to the removal of the NTA DG. Subodh Kumar, who has now been removed as the Director General of the National Testing Agency. Meanwhile, he has now been replaced by Pradeep Kharola as the new NTA DG. Of course, now what is expected today, Sabyasachi, as far as the CBI now taking over the probe, it is also now seeking assistance when it comes to the other states where the follow-up investigation will take place. Absolutely. See, Gujarat and Bihar government have also transferred the FIR in their respective states over the alleged NEET 2024 irregularities to CBI for investigation. And the CBI has also registered a separate case on the same issue on the complaint of the Ministry of Education. See, the Bihar EOU also had gone on record on NTA's non-compliance in security standards related to examinations, transportation, storage, handover, takeover of the question paper. So clearly at this particular time, the CBI would also take action against the NTA officials if found to be guilty inside this a scam that is taking place. Meanwhile, see, the IMA also have acknowledged the timely action taken by the central government in the entire saga, but the opposition parties have been maintaining the fact that this is just a cover-up which is being done by the central government. The focus should be on the system, that how this has been taking place time and again, how the paper have been leaked. Meanwhile, the central government has assured that the priority, that the top priority of the government is the youth of the country. So a high-level meeting that is also expected on part of the new NTA DG as well, of course, remains to be seen when it comes to the course of action that will be taking place as far as the investigation is concerned. Sabyasachi continues to be with us. In the meantime, we talk about the Bihar angle, because the Bihar police that has now been looking into the case already has made some significant findings. As per the Bihar police, the source that has been seized on the question papers have been traced to Hazaribagh. Now, the police believes that poly bags in which these question papers were stored, they were tampered with. The police has also found glaring lapses in the transportation and the storage of papers. The police has also learned that after questioning with some of the arrested accused, they were also provided with duplicate SIM cards and hotel rooms by the crime racket that is said to be involved when it comes to leaking papers. Now, when it comes to the investigation that is picking up pace, and so is politics, with the opposition now accusing the government of playing with the future of the youth, opposition which is stepping up its demand for education minister's resignation, and also while the probe is picking up pace, when we are also talking about the action not just against the minister himself, but the students and their parents have been demanding for a re-examination. एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा, ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। डायरेक्टर बदलने से कोई होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। मंत्री बदलने चाहिए। पहले मंत्री महोदय ने कहा था कुछ गड़बड़ है ही नहीं, फिर कहा था कुछ गड़बड़ हो सकती है, और कल 24 घंटे जब थे एग्जाम के लिए, तब परीक्षा ही पोस्टपोन कर दिए। और जो ये गड़बड़ी चल रही है, कहते हैं 1 नेशन 1 पोल, 1 एग्जाम नहीं कर पाते। जो आदमी बैठे बैठे क्लीन चिट देते, सड़कों पर बच्चे आए, उनका आक्रोश आया, उसके बाद कहानियां गढ़ने लगे कि थोड़ी विसंगति हम देखेंगे। अब क्यों कर रहे हैं आप? ये एनटीए में फ्रॉड है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। The cancellation of NEET PG exams is sending a chilling message
across the country that the BJP government is incompetent, is allowing gangs, organized gangs, to leak the papers. Well, this is on part of the opposition, how they are taking on the government. But let's talk about the action plan that is now being initiated on part through government sources that we are picking up the information. Let's break that down as far as the 10-point action plan is concerned. NTA DG Subodh Singh, who has now been shunted out, he's now been replaced by Pradeep Kharola. This is, let's talk about the other action as well. This is the 10-point action plan that will be put in place by the government. There is going to be a high-powered panel of experts that has been formed. What is being said that this panel has 7 eminent personalities, experts in it, that will be looking into the affairs of the NTA. Eminent experts like former ISRO chief is said to be in the panel. He's leading the panel. If we talk about Dr. Radhakrishnan, let's also in the meantime talk about another action where the committee will be making recommendation on the reforms, what is needed in the NTA. We also talk about when it comes to at least 2 months' time that would be given. Focus would be rather when it comes to improving data security and the protocols in examination that needs to be followed so as to avoid such kind of a situation in the near future. High-powered panel to improve the functioning of the NTA or the National Testing Agency, and the panel would be making those recommendations in at least 2 months' time. So there is a designated time that has now been given for the action plan to be put into force. When it comes to the CBI investigation, we know that has already been ordered in the NEET and the NET showdown, and there is more talk when it comes to transparency in the ongoing examination process. When the government has also assured that the strictest possible action would be taken against the ones who are guilty, even within the NTA. If there are any misgivings, they will not be spared. Stronger act as we are looking at 1 crore 5 or at least 10 years jail term when it comes to those who are said to be involved in examination cheating or even when it comes to leaking of paper. Abhishek Raj हमारे साथ जुड़ रहे हैं. Abhishek, good morning to you. ज्यादातर हम जो बात कर रहे हैं उसके जो तार है, जो लिंक है, वो बिहार से जुड़ते हुए जा रहे हैं. अब सीबीआई टेक ओवर कर रही है केस को. यहीं पे पुलिस की तरफ से जितनी जो तफ्तीश की जा रही है उसके ऊपर बताया जा रहा है कि सीबीआई अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी. देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग. और जिस तरीके से पूरी रफ्तार में अब जो नीट का जो पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये स्कैंडल खुलता हुआ नजर आएगा. आप याद कीजिए, जब शुरुआत में शास्त्री नगर थाने में ये मामला दर्ज था पटना में, उसके बाद जब ईओयू को ये पूरा मामला ट्रांसफर किया गया था, उस वक्त से ईओयू काफी एक्टिव थी. कई जगह पर रेड्स करके उसमें एक नाम खोजा था जिसमें संजीव मुखिया का नाम बहुत प्रमुखता से सामने आ रहा था, जो कि इस पूरे पेपर लीक स्कैम का मास्टरमाइंड है, किंगपिन है. संजीव मुखिया अभी गायब है. इसके तार झारखंड से, हजारीबाग से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं. और अब सीबीआई जब इस केस को हैंडओवर कर रही है तो उसके लिए थोड़ा सा राहत और फायदे की बात यह है कि ईओयू ने अपना आधा होमवर्क करके दिया हुआ है. उसने अक्यूज के नाम रखे हुए हैं, उसने इन्वेस्टिगेशन करके उन पिन पॉइंट्स को चिन्हित किया है जहां जहां से पेपर लीक होने की संभावना है. जो कल प्रेस रिलीज ईओयू की तरफ से जारी किया गया था, उसमें बाकायदा इस बात को बताया गया था कि जो जले हुए पेपर्स मिले हैं जो सेफ हाउस से जहां पर बच्चों को रखा गया था, वो बुकलेट नंबर 613648 यानी कि जो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में सेंटर पड़ा हुआ था जहां पे बुकलेट गया था, उससे मिले हैं. तो आधी कार्रवाई ईओयू ने अपनी पूरी कर ली है. इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी रफ्तार में है और जब सीबीआई इस मामले को टेक ओवर करेगी तो ये लगता है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पे जो बड़ा खुलासा है वो करते हुए नजर आएंगे. जी, लेकिन अभिषेक, अगर आगे की कार्रवाई के बारे में बात की जाए तो गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं, आगे तक कितना पता चल पाया कि इनको कहां रखा गया था, इनमें से कितने छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं और बाकी कितने लोग इन्वॉल्व हैं? देखिए, बिल्कुल, जब शुरुआत में ये पूरा मामला शास्त्री नगर थाने के पास पहुंचा था तो 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. इन 13 लोगों में 2 छात्र थे, अनुराग यादव और आयुष राज. इसके अलावा उनके रिश्तेदार थे, आयुष के पिता थे अखिलेश और अनुराग यादव के फूफा थे सिकंदर, जो इस पूरे एपिसोड के एपिसेंटर माने जाते हैं. इसके अलावा जो पेपर लीक करने वाले सदस्य थे, जिनमें कि नीतीश कुमार, अंकित आनंद जैसे लोग शामिल थे, इन सभी लोगों को जो पुलिस है उसने गिरफ्तार किया था. इसके अलावा सिकंदर के ड्राइवर और उसके अलावा अंकित आनंद के जो खास थे रोशन, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया है. और अब देवघर से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो 6 लोग इस पूरे पेपर लीक को सॉल्व करने में और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल थे. तो ये पूरे तार बिहार से झारखंड तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं.
दो छात्र अभी भी सामने आए हैं जिनको समन करके बुलाया गया था पूछताछ करने के लिए एनटीए से डिटेल लेके। 9 छात्र हैं जिनको बुलाया गया है, जिसमें 2 ही छात्र आ पाए हैं, बाकी 7 छात्रों का आना अभी बाकी है। तो जांच चल रही है, बहुत जल्द और भी लोगों की गिरफ्तारी जो है वो इस पूरे मामले में संभव है। जी चलिए, धन्यवाद आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीबीआई which is now taking over the case as far as assistance on part of the police in Bihar with the ongoing investigation, the CBI will be moving forward with that. In the